Welcome to ABC Real by Bhanu channel. Today we are going to discuss Chapter 2 Latitudes and Longitudes. This is a chapter of Class 6 subject SST Geography. This video is beneficial for Army Public School students. This video is important for exam perspective. In this video, we are going to discuss question and answer of this lesson. Friends, Geography Chapter 2 से पहले हम लोगों ने Chapter 1 के question and answers डिस्कस किए हैं. अब इस चैप्टर का वीडियो देखने से पहले उस चैप्टर का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ज्योग्राफी ऑल चैप्टर सीरीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है. और हमारे वीडियोस अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी हमारी एसएसटी ज्योग्राफी ऑल चैप्टर सीरीज का बेनिफिट उठा सके. फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी न्यू व्यूअर है जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को एंड तक जरूर देखें और बीच में स्किप कर ना जाएं. अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं. Question and answer. Question number 1. What is the globe? What are the advantages of the globe? Answer of this question is, globe is a true model of the earth. Advantage of globe are as follows. First, it shows the exact position of continents, countries, oceans and seas. Second, it covers the area in a border form. Third, it shows the exact shape of the earth, that is slightly spherical, flattened at the poles and bulges at the equator. Question number 2. What is the true shape of the earth? Answer of this question is, Earth is slightly flattened at the north and south poles and bulges in the middle. The shape of the Earth is geoid, that is an Earth-like shape. Question number 3. What is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? Answer of this question is, the Tropic of Cancer lies 23 and 1/2 north of the equator. Question number 4. What are the 3 heat zones of the earth? Answer of this question is, 3 heat zones of earth are torrid zone, temperate zone and frigid zone. Question number 5. What are parallels of latitude and meridians of longitude? Answer of this question is, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. The line of references running from the North Pole to the South Pole are called meridians of longitudes. Question number 6. Why does the torrid zone receive the maximum amount of heat? Answer of this question is, the area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called torrid zone. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in this area. Hence, this area receives maximum amount of heat. Question number 7.
Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? Answer of this question is, in London, the Greenwich Mean Time (GMT) is followed. The Indian Standard Meridian is located 82 and 1/2 degree east of the Prime Meridian. Thus, the Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So, when it is 12 noon in London, it is 5:30 p.m. in India. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. For more videos, press bell icon. Friends, SST, Geography, all chapter series एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी हमारी SST, Geography, ऑल चैप्टर सीरीज का बेनिफिट उठा सके। फ्रेंड्स, आपको जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम उस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।